नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अक्षत। आप देख रहे हैं अक्षत नेगी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेरे IIM कोझिकोड का इंटरव्यू एक्सपीरियंस। सो माय इंटरव्यू वाज शेड्यूल्ड ऑन 14th ऑफ फरवरी सुबह के स्लॉट के लिए 8 AM वाले स्लॉट के लिए। सो इट वाज इन वेलकम होटल ITC। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेंट टू सेकंड फ्लोर। आई वाज अकम्पनीड विद माय मदर। तो मैं सेकंड फ्लोर पे गया, वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था। 7:45 के अराउंड में पहुँच गया हूँ उस प्लेस पे। एंड फॉर 10 minutes आई गॉट माई वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड एवरीथिंग डन। जो भी फॉर्म्स वगैरह उन्हें दिए थे। सो उन लोगों ने ना एक फॉर्म भरवाया था पहले, जब जो उनकी पहली जो स्टेज 1 कॉल्स आती हैं उसमें वो फॉर्म भरवाते हैं। तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं कि इफ़ योर कॉलेज इज इन NIRF रैंकिंग और समथिंग लाइक दैट। सो आई एम फ्रॉम SRCC, तो वो तो NIRF रैंकिंग में आता है, NAC वैक में आता है। तो वो सब उसमें मैंने लिख रखा था। तो उसमें बहुत सारी चीज़ लिखनी थी, और हॉबीज़ एंड अदर थिंग्स एज वेल, कि व्हाट डू यू लाइक, वाई MBA एंड ऑल दैट। सो वो सब मैंने लिखा था। एंड पूरा वेरिफिकेशन वगैरह कराया। उसके बाद आई वेटेड फॉर 40-45 मिनट्स एंड आई वाज सिटिंग इन द हॉल इटसेल्फ जहाँ पे वेरिफिकेशन हो रहा था। 8:45 के अराउंड दे आस्क्ड अस कि द वैट विल स्टार्ट एट अराउंड 8:30 पे उन्होंने बता दिया था। सो 8:45 के अराउंड हम लोगों को शीट्स दे दी थी, पर वो अपसाइड डाउन रखी थी। 9 से हम लोगों ने लिखना शुरू किया। दैट वाज अराउंड 25 मिनट्स और सो। तो 25 minutes for everyone and 35 minutes for the PWD candidate. अच्छा, just for your reference, my profile is 997, 10-12 में 90% के ऊपर। कॉलेज में I had 7.9 CGPA and I am from SRCC. I did my BCom honors over there. I had 1 year of gap and I am PWD. 1 साल का गैप था, उस पर मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, मैं बताऊंगा आगे। I started with my VAT का टॉपिक was entrepreneurship can transform rural India. So उस पर मैंने ऑलमोस्ट 1.7 साइड्स लिख सकते थे। एक शीट ऑफ पेपर दिया था, 2 साइड्स लिख सकते थे उसमें, बट 0.3 साइड उसमें ऊपर नाम वाम लिखना था, तो भरी हुई थी। तो 1.7 साइड्स आई कुड हैव रिटन। आई रोट ऑलमोस्ट 600 वर्ड्स और सो, 550-600 वर्ड्स बॉल पार्क। तो मैंने तो बहुत स्क्रिबल करके लिखा था, और आई फील कि आई कुड हैव रिटन बेटर वैट। मैं आगे अपने रिग्रेट्स में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या गलतियाँ की। उसके तुरंत बाद हम लोगों के मैसेज आ गया, वहाँ पे अनाउंसमेंट भी हो गई कि किसका कौन सा पैनल और किसका कौन सा इंटरव्यू। मेरा था फर्स्ट पैनल, फर्स्ट इंटरव्यू। इट वॉज ऑन द 11th फ्लोर एज फार एज आई रिमेंबर। सो आई वेंट टू द 11th फ्लोर बिकॉज मेरा फर्स्ट पैनल में फर्स्ट इंटरव्यू था। तो आई स्टूड आउटसाइड द इंटरव्यू रूम। आई नॉक्ड वंस, तो no one opened. I just opened the door a bit and I asked if I can come or not. So they said कि we'll call you. तो मैं फिर बाहर ही बैठा रहा एंड माई मदर वॉज विद मी। सो मैं थोड़ी देर बाहर बैठा रहा। उसके बाद प्रोफेसर खुद आया बाहर एंड ही आस्क्ड मी टू कम इनसाइड। सो आई वेंट इनसाइड। आई टुक माई फोल्डर विद मी जिसमें मेरा फॉर्म था, जिसमें मैंने सब कुछ लिखा था, अलॉन्ग विद दैट सारे मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह। आई वॉज ऑल्सो कैरिंग माई CV एज वेल। सो मैं CV बना के ले गया था सारे इंटरव्यूज़ के लिए। ज़रूरी नहीं है, कोई नहीं ले जाता, मैं लेके गया था कि मैं अपना फोल्डर दूंगा उनको, वो CV पे से मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि प्रोफाइल पे से पूछेंगे। जिन कॉलेजेस में एक प्रोफाइल फॉर्म भरवाते हैं, जैसे शायद FMS में भी प्रोफाइल फॉर्म भरवाते हैं। FMS का तो फॉर्म ही नहीं भरा, बट बाकी जितने के भी फॉर्म्स भरवाते हैं सब में सब में आई प्रेफर फिलिंग अ फॉर्म, प्रोफाइल फॉर्म, क्योंकि उसमें मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं आगे बताऊंगा। उसमें आई कैन से अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट माई सेल्फ। बट जैसे कुछ कॉलेजेस में प्रोफाइल फॉर्म नहीं भराते, एज सच कुछ SOP टाइप का नहीं लिखना होता है। जैसे बैंगलोर में लिखना होता है, इवन अहमदाबाद में नहीं लिखना होता, कैल में भी नहीं लिखना होता। सो अगर तुमसे वो टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ नहीं पूछ रहे, तो दे वोंट नो हु यू आर। तो दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर यू एज अ इंटरव्यूवी। तो आई फील कि कोझिकोड में दिस वर्कड आउट फॉर मी, कि जो इंटरव्यू था वो वॉज टोटली बेस्ड ऑन माई प्रोफाइल फॉर्म। तो आई वेंट इनसाइड, आई सैट डाउन एंड आई ग्रीटेड देम, हेलो, नमस्ते, व्हाटएवर। मैं बैठा, मैंने उनको, अपना फोल्डर था मेरे हाथ में, तो द मैम सेड कि यू कैन कीप द फोल्डर ऑन द टेबल। एंड शी हैड अ लैपटॉप इन फ्रंट ऑफ हर। शी वॉज जस्ट रीडिंग थ्रू माई SOP फॉर्म जो था। उसमें काफ़ी सारे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जैसे मेंशन की हॉबीज़, वाई MBA एंड क्वेश्चंस लाइक दैट। सो वो सब उनने पूछा मेरे से, एंड सॉरी, वो सब उनने पढ़ा मेरा। And as soon as I kept my folder on the table, she was like, you have a very interesting profile, and she started talking more about my profile because I had actually done a lot of things in a wide range of things. मतलब ऐसा नहीं है कि कोई मैंने एक चीज़ बहुत अच्छी की हो, मैंने सब चीज़ थोड़ी थोड़ी की है। तो दैट मे बी इंटरेस्टेड है थोड़ा सा। ये चीज़ मेरे को लखनऊ में बोली गई थी। सो देन शी आस्क्ड मी, हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग सिंस लास्ट 6-7 months। दैट वाज डायरेक्टली सेंटर्ड अराउंड कि गैप क्यों लिया। बेसिकली उनका मतलब ये था कि 6-7 महीने से क्या कर रहे हो भाई। तो आई मेंशनड दैट आई वेंट फॉर अ 3 months ट्रेनिंग एट NIVH देहरादून। सो NIVH इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड, विच इज नाउ नोन एज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट फॉर पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटी। सो दैट इज अ गवर्नमेंट रन इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे आई डिड अ 3 months ट्रेनिंग विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ थिंग्स विच इंक्लूडेड मोबिलिटी एंड एवरीथिंग। सो द विजन विच आई हैव
does not allow me to navigate freely by myself. तो अगर मेरे को कहीं बाहर जाना है तो I'll have to take someone's help, and a lot of things मैं struggle doing it by myself. So I went for a 3 months training. I told ma'am कि I had 2 job offers from college but I could not join. One was in Mumbai, so going to Mumbai was not very feasible for me. Another one is in Delhi. It was more of a sales role, so I did not want to do a sales role at that point of time. So I did not say this कि I did not want to do sales. I said that the role did not excite me that much. So I did not mention कि sales था क्या था, but I mentioned to her that, and I said कि after just coming back to home, I also had another job offer from one of the as a research analyst, which was a good role, but it was in Noida, and I had made my mind कि I have to do this training as well. So my parents were also a bit adamant on this कि you should do this training as it would help you in the long run. So I went for a 3 months training. It started in August, somewhere in August. Before that, I was learning different various things. I was a part of a NGO as well for 2 months while I was at home. So I used to help with worksheets and everything for teaching students. So I was involved in that, and I went for a 3 months training. So there we had a lot of things. I mentioned all this. I'm just letting you know this because I mentioned all this. कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि मैंने मैम को क्या क्या बोला. All this is in English, proper English. So I mentioned that we used to have different classes. Our classes involved mobility classes in which we were blindfolded, and we used the white cane to navigate throughout the campus. It was a 44-acre campus, and we were taught how to use our senses. Like there are different kind of senses: tactile sense, kinesthetic sense, temperature sensing. For example, if I'm walking besides a wall, and if a wall ends, so I should be able to gauge कि यहाँ पे वॉल नहीं है. अगर मैं ऐसे ऐसे करके जा रहा हूँ और यहाँ पे मेरे कान में हवा नहीं आ रही है और साइड से हवा आ रही है, तो आई शुड बी एबल टू गॉज इट. एंड इफ आई एम वॉकिंग, आई शुड बी अवेयर कि जो पैर मेरा जिस ब्रिक पे पड़ रहा है या फिर टाइल पे पड़ रहा है उसमें कैसा टैक्टाइल सेंस है. अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है तो इट शुड बी अ लैंडमार्क फॉर मी कि यहाँ से मुझे मुड़ना है. सो ऑल दैट वॉज टॉट. एंड apart from this, the second class which we has was of typing, then typing in Hindi as well as English. Hindi तो नहीं सीख पाया मैं इतनी, but English typing थोड़ा decent हो गया मेरा. I could also improve more. बहुत ख़राब है अभी भी. After that we used to have home science classes in which we used to cook. So I learned cooking and शर्ट पे बटन लगाना, आयरन करना, कपड़े धोना, all घर का घरेलू जितना भी काम होता है, like right from सुई में धागा डालने से लेकर. So they have their tools. So जिसके थ्रू वी कुड पुट द थ्रेड इन द नीडल, अक्रॉस द नीडल. एंड उसके बाद खाना बनाना फ्रॉम बेसिक सब्जी, दाल, हलवा and everything. So I learned a lot of things with that thing in mind. Then we used to have a counseling sort of thing. So psychology department होता था तो वहाँ पे counseling type की चीज़ होती थी. फिर break होता था, and after the break we used to have our braille classes. So I learned Hindi, English, braille both, and level 1 itself. Level 2, level 3 नहीं सीखा. Level 2, level 3 shorthand. So level 1 basic braille जो 3rd 4th class तक के बच्चों को आता है, जो braille में पढ़ाई करते हैं. And after that we used to have our computer classes. So we learned softwares like NVDA. It is similar to JAWS, but it is open source. So I mentioned that as well. After that we used to have our मोबाइल फ़ोन का क्लास in which they used to teach us talkback softwares. After that talkback softwares हो गए, बहुत सारे different kind of apps होते हैं. For example, there's a app money करके, you can just click a picture of the note and it will tell you कि कितने रुपए का नोट है. So that is much helpful. And after that I used to have awareness class. So we were around 10 or 12 people in our batch, and coming from various backgrounds. I told them कि one was from Jammu Kashmir, some people were from UP, some people were from very good academic backgrounds, some people were from backgrounds like who have not studied even in the first, second standard, and there were older people as well. There was someone from the CRPF as well with us. He was in his early 40s. There was someone who had lost his vision due to glaucoma in his early 30s, and he used to he was from Bihar. He was my roommate as well. So I mentioned all sort of things about that. So she was excited about the cooking thing. So she asked me, what all can you cook? I told her कि ये I can cook, and she also asked me कि what do you like? So I said I mainly like घर का खाना. I just said घर का खाना, being like dal rice and everything. So she asked me like कि what exactly in घर का खाना. I mentioned dal
rise. So after that, she hopped on to the internship which I had about the Aam Aadmi Party. So I told her more about what I did over there. It was mainly around AI content and everything. So she asked me a question regarding that. There was a recent article in the newspaper that AI is replacing HI. So I mentioned, so I asked her, ma'am, I'm not sure what HI is. So she mentioned human intelligence. So I mentioned like I threw a quote at her, which was the quote is by Ashwini Bajaj sir. So I don't exactly know if it is by him or not, but he quotes this quote a lot of times. So I mentioned this quote. This quote go like, AI will replace you if your I is A. That is, artificial intelligence will replace you if your intelligence is artificial. So I mentioned that intelligence should not be artificial. It should be very depth based. It should not be surface level या surface नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, you know, only on the surface level. It should be very deep, because even to train the AI, even to put in the prompts in ChatGPT or something software like that, you need to be very specific, because ChatGPT hallucinates a lot, and if you know what exactly to ask to ChatGPT, it can help you a lot. And I mentioned that I use ChatGPT very extensively. Like ChatGPT has become a very integral part of my life. Some of my friends make fun of me कि ChatGPT लड़की होता तो शादी कर लेता. I mentioned how I use it for writing emails and all, not just for writing emails but also writing SOPs and a lot of things. I did mention that I use it to write a lot of SOPs and other things as well, scholarship things. I mentioned that कि CFA की scholarship मैंने इसी से लिखी थी, so they started laughing, and I mentioned that कि मिल भी गई मेरे को. So I also mentioned कि HDFC बैंक से थोड़ा मेरा लफड़ा हो गया था. उन्होंने कुछ अनऑथराइज ट्रांजैक्शन कर दी थी मेरे बैंक में, तो मैंने उनको बहुत सारे स्ट्रिक्ट ईमेल्स लिखे. तो मैंने उसमें लिखा था कि मेक द ईमेल वेरी स्ट्रिक्ट, तो उसने बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड्स में ईमेल लिखा था. तो द प्रोफेसर स्टार्टेड लाफिंग. देयर वर टू प्रोफेसर्स, आई फॉरगॉट टू मेंशन, एक्सट्रीमली सॉरी. अभी जो भी प्रोफेसर से बात हो रही है, दैट इज अ फीमेल प्रोफेसर. देयर वाज अ फीमेल प्रोफेसर, देयर वाज अ मेल प्रोफेसर. सो फीमेल प्रोफेसर वाज सिटिंग टुवर्ड्स माय राइट एंड द मेल प्रोफेसर वाज सिटिंग टू माय लेफ्ट. तो अरे इसमें मिरर हो रखा है, सो वो मेरे हैंड एक्शंस की वजह से सही नहीं आएगा. एनी विच वेज, लेट इट बी. So I was just talking to the female professor, and I was totally talking to my female professor, and the male professor was laughing in between. He was just adding comments in between, as I mentioned while speaking. So she hopped on to that I had done some 2-3 different sort of social work sort of a thing. I worked with volunteered with CRY, Child Rights and You, in November, December during my gap year. I had a lot of time during my gap year along with my CAT prep. I started my CFA prep somewhere in December after my CAT examination, so it was not a problem for me. I used to study for CAT, and along with that, while I was in the training, I could not study at all because I used to have classes from 9 to 5, and it was like very hectic over there. So I used to wake up late in the morning, and I used to sleep very early as it was very tiring over there, and the environment over there was sort of a bit taxing as well. So वहाँ पर तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ पाया, but while I was at home I could have done a lot of things. So I mentioned all of them. While I was at NIVH, so there is a radio station over there, so I worked over there as well for 3 months. Worked as in I used to record videos for them because I have been in this content space since a lot of time. So I recorded one video for them, and they were very happy with that. So I got an opportunity to do some of the live shows as well, on-air shows as well over there. And sorry for the do not disturb. Yeah, so I had done almost 3 social work back to back, so it was a consistent thing. It was not like कि दिखावे के लिए नहीं कर रहा था कि मैंने प्रोफाइल में लिखने के लिए नहीं किया. It was just a thing which I was doing. So she asked me about कि do you know about the UN sustainability goals? So I did not know anything about it. So I just mentioned, ma'am, I'm not very sure about this, and I don't want to comment. मतलब ऐसा नहीं, I don't want to comment, but I mentioned something कि I would not like to take a wild guess at that because I am not very sure about this. See, I could have said this because she was asking me a lot of questions, and I could give a lot of answers as well. So if she asked me 10 questions, and if I am not able to answer one question, if I directly say that मैम ये नहीं आता, तो it is fine. 10 में से एक ठीक है, 5 में से एक ठीक है, 4 में से एक क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है. बट अगर मैं 4 में से 4 क्वेश्चन के लिए बोलूँगा मैम नहीं आता, या फिर एक ही क्वेश्चन वो पूछेगी उसका मैं गलत आंसर दूंगा और मैं फालतू में बीटिंग अराउंड द बुश करूँगा, तो that won't look nice. After that she says कि okay, I am done. Then the male professor starts, and his accent was not very understandable,
तो I was struggling with his accent a lot, and on multiple occasions I asked him to repeat. I said pardon too many times, and I felt that I did not feel while speaking, जब मैं बार बार pardon बोल रहा था तो मेरे को लगा नहीं कि it would be disrespectful, but later on introspection में I felt कि it might have been disrespectful, but नहीं समझ में आ रहा था तो मैं क्या कर सकता था. तो it was like a very डिलेमा सॉर्ट ऑफ अ थिंग, धर्म संकट टाइप का चीज़ था कि अब मैं ना तो मैं बार बार पार्डन बोल सकता हूँ, ना ही मैं बार बार उनको वो कुछ पूछ रहे हैं और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि मैं कुछ और उल्टा सीधा आंसर दे दूँ, जो कि हुआ है मेरे साथ एक बार. सो ही आस्क्ड मी व्हाट काइंड ऑफ गिटार डू यू प्ले. सो आई मेंशन द अकूस्टिक वन. ही वाज लाइक व्हाट काइंड ऑफ अकूस्टिक, व्हाट काइंड ऑफ इज द अकूस्टिक गिटार. तो आई एक्सप्लेन हिम थोड़ा सा. सो आफ्टर दैट ही सेड यू ऑल्सो प्ले दिस अदर इंस्ट्रूमेंट. ये सारे क्वेश्चन ही इज आस्किंग फ्रॉम माई फॉर्म. उसमें मैंने लिखा था हॉबीज में आई प्ले गिटार, यूकेलेले एंड अदर इंस्ट्रूमेंट, अदर थिंग्स एज वेल आई डू. सो ही मेंशन कि व्हाट इज दिस अदर इंस्ट्रूमेंट you play. So he was unable to gauge the word ukulele, which initially I was also not able to, but he was asking me again and again what is this instrument and all that. So इसी point पे मैं बार बार pardon बोल रहा था because I was unable to understand his what he was trying to say. So I later on asked, he asked me what other instrument do you play. I said ukulele. So he asked me what is that. So I mentioned it is an Hawaiian instrument कि कैसे कैसे बना, नाइलॉन स्ट्रिंग्स होती है, मैं नाइलॉन स्ट्रिंग्स और स्टील स्ट्रिंग्स के बीच का डिफरेंस समझाया मैंने उनको, एंड वुड कैसे डिफरेंट होती है, शेप कैसे डिफरेंट होती है, कितनी स्ट्रिंग्स होती है, ट्यूनिंग कैसे होती है, एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ डिफरेंस कैसे होता है, वो सब आई एक्सप्लेन हिम. तो ही आस्क्ड मी व्हाट इज द डिफरेंस टू द प्लेयर. सो आई एक्सप्लेन हिम कि फॉर्म फैक्टर का डिफरेंस होता है, साइज का डिफरेंस होता है, कि साउंड का डिफरेंस कैसा होता है. आई सेड कि नाइलॉन स्ट्रिंग्स होती है जनरली, एंड गिटार में नाइलॉन स्ट्रिंग्स का अलग से स्पेनिश गिटार होता है जिसमें नाइलॉन स्ट्रिंग्स होती है, क्लासिकल गिटार जिसको बोलते हैं, एंड वुड स्ट्रिंग्स और ये सब मैंने एक्सप्लेन किया, मटीरियल, साइज, साउंड, ट्यूनिंग एट्सेट्रा आई मेंशन. फिर आफ्टर दैट ही आस्क्ड मी व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन डिफरेंस टू द म्यूजिशियन एज आई मेंशन. तो मैंने उनको बताया कि कैसे कैसे साउंड में डिफरेंस आता है to the musician. So he asked me, do you consider yourself a good guitarist? I mentioned modestly कि sir, I think I'm fairly fine with that. I have been playing since I was in 8th, so I can play some decent songs, some of the famous decent songs, but to jam along with some of my friends. But I don't consider myself very classically or very म्यूजिक थ्योरी के हिसाब से आई डोंट नो मच, कि आई नो सम ऑफ द स्केल्स, द मेजर स्केल्स, द माइनर स्केल्स, द पेंटाटोनिक स्केल्स, जो बेसिक स्केल्स होते हैं वो सब आई अंडरस्टैंड, बट नॉट वेरी गुड विद द लीड्स एंड द एवरीथिंग. जैसे फॉर एग्जांपल जो बहुत बड़े म्यूजिशियंस होते हैं जो ब्लूज वगैरह प्ले करते हैं, वैसे टाइप का कुछ नहीं प्ले कर पाऊंगा, बट बेसिकली आई गेस्ट हम जो फेमस जो अपने गाने होते हैं वो सब आई कैन प्ले सम ऑफ द सॉन्ग्स एज वेल, सम ऑफ द लीड्स एज वेल, जो बेसिक्स है, बट नॉट वेरी फैंसी स्टफ. हैज गिटार बीन यूज्ड इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? So because I also mentioned that I learned Hindustani classical music, I was like, I shifted to how sitar and veena are similar instruments, but I mentioned while I was speaking about sitar and veena, he was like, nahi, I'm not asking about that. He was like, has guitar as an instrument being used in Hindustani classical? So I mentioned ki sir, I'm not very sure about this. So he was like, you should go look it up. So though I did not. After that, he asked me who are some of the greatest guitarists of all time. So I mentioned George Harrison and from Beatles, and obviously that was not my first answer. That was just one of the answers. That is not. So I mentioned Eric Clapton and various other, Jimi Hendrix and others as well. So I mentioned some of the names like David Gilmour from Beatles, and who all did I mention else? Why did I mention Paul McCartney? He plays bass. I'm not sure if he plays. He does play guitar, I guess. So he asked me, is there a connection between them and India? So I mentioned about the Beatles connection with India and the Beatles ashram in Rishikesh, 84 कुटिया जो है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताया कि in the late 1960s they came to India, and some of their songs have a touch of Hindustani classical instruments as well. टच किया, पूरे इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए हुए हैं, एंड आई मेंशन सम ऑफ द सॉन्ग्स एंड विच दे हैव यूज्ड. आई ऑल्सो मेंशन क्वींस. जब मैं बोल रहा था अपना वो ग्रेटेस्ट गिटारिस्ट का बता रहा था, तो क्वींस में मेंशन किया था. तो मैंने बोला था कि द लीड सिंगर फ्रेडी मर्करी, तो हिज प्रायर नेम वाज फर्रुख, एज फार एज आई रिमेंबर. ही वाज अ पार्ट ऑफ अनडिवाइडेड इंडिया. तो मैंने बताया कि क्या सर रेफरेंस है. तो आई जस्ट मेंशन एज वेल कि ही इज़ नॉट अ गिटारिस्ट, बट दैट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ इट. तो ये सब आई एक्सप्लेन. सो दैट वाज अ फेली फाइन आंसर आई फील. So after that, he started asking me about my impairment and how does it affect
resurrect and alter my life. तो I mentioned कि कैसे कैसे what all can I do, what all can I not do. तो ये सारी बातें मैंने उनको explain करी काफ़ी अच्छे से. Then he started asking me if I would be able to handle the academic rigor and everything. So I mentioned कि sir, in the past people have been handling the academic rigor, and IIM Kozhikode has always been a very accessible and a very a DA friendly campus. So I feel कि I would be able to manage that, and I have some of my seniors as well from my college, and I think that I have managed my academics till my 12th standard, having faced this impairment since childhood by birth. So I think कि I am fairly comfortable now. I have acclimatized to this surrounding which I have, to the circumstances and the situation which I have. So I feel कि I would be able to manage that. It would be slight of a learning curve initially, but eventually I'll get along, and I'll have people around me as well to help me. I, for some reason, don't know why I am coming half in this video. Sorry. So I mentioned that I'd be able to manage in the longer time, but eventually in the initial 1 or 2 weeks it will be a slight of a learning curve. After this question, he was like, great, I'm done as well. And after that, the male professor only asked कि you would have all the calls A to Z. He said कि you would be having all the calls. So I mentioned कि हाँ sir, I have all the calls. So he was like, अच्छा, all A to Z. So I mentioned yes sir. So they both started laughing, and the female offered me candy, dodi. And after that, I left the room, and I said thank you and whatever. So anyways, the result was converted after waitlist, PWD waitlist 1. Thank you for watching the video. तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, और बताओ कि क्या क्या पूछना चाहते हो. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड गुड बाय, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, विश यू हैप्पी मैरिड लाइफ.